So hello my dear students, this is Sir Gaurav again welcomes you all in our Path Maths online classes. Dear students, we are doing chapter 8 known as application of integrals, and in this chapter we have completed 8.1 exercise in the last videos. So today we are going to start with exercise 8.2, and before starting our topic let me recall the working rule to solve the given question or find the area of a given region. First of all, we have to identify the curve or the given function. We need to identify which curve is given to you. After that, we have to find the points of intersection if it is needed. Then we need to draw the rough sketch after that we have to set the limits of bounded region. At last take the integration within limits, and after solving that integration you will find the area of the boundary region. This was the working rule I have told you in the last videos as well. First of all, you have to identify the curve. Whatever the given curve is given to you, you have to identify which curve is given to you and along which axis this is your curve. After that we need to find the points of intersection. अगर आपको ज़रूरत है point of intersection के लिए, तो first of all you have to just find the point of intersection, and this will be happen in case maximum time whenever lines are given to you or a curve with the line is given to you. Third point, we need to just draw the rough sketch. पहले rough sketch ड्रॉ करना है, और rough sketch करने के बाद उसको लिमिट्स को सेट करना है कि from where this is region is bounded and till where this is your ending. Last, take the integration as your lower limit is the starting point and upper limit as your एंड पॉइंट. जहाँ से कर्व आपका स्टार्ट रीजन बाउंड होता है उस पॉइंट से लेकर जहाँ पर एंड होता है उस पॉइंट तक आपने लोअर एंड अपर लिमिट को यूज़ करके इंटीग्रेशन करेंगे. देन यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन. बेसिस ऑन दिस वर्किंग रूल लेट मी डू द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 8.2 बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर नाउ आउट ऑफ सिलेबस. सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 8.2. Question number 3 is given as find the area of the boundary region by the curve y is equal to x square plus 2, y is equal to x is equal to 0 and x is equal to 3 and x is equal to 3. This is the curve, this is straight line, this is straight line, this is straight line, and the region bounded by all these functions we need to find the area of that boundary region. So first of all let us identify which curve is this one. Y is equal to x square plus 1 plus 2. which curve is this one? Let's see. बच्चों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर अगर किसी एक वेरिएबल का स्क्वायर है और दूसरे का लीनियर पावर में है तो इट मीन्स दैट विल बी डेफिनेटली अ पैराबोला. ये पैराबोला होगा. बट ये पैराबोला है तो पैराबोला कौन सा है? दिस इज योर अपवर्ड पैराबोला. क्यों? क्योंकि अगर एक्स का स्क्वायर है तो दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, और अगर वाई का स्क्वायर आपको मिलता है तो दिस विल बी योर श्योरली अलोंग एक्स एक्सिस. नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर इज देयर एंड द लीनियर फंक्शन ऑफ वाई इज देयर, सो इट मीन्स दिस विल श्योरली बी अ अपवर्ड पैराबोला. और अपवर्ड पैराबोला है लेकिन इसके वर्टेक्स भी जानना जरूरी है. वर्टेक्स क्या होंगे? वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला in standard form is given by like this. Let's compare this standard form equation of parabola, upward parabola, with the given equation of the parabola. This can be written as x square is equal to y minus 2. Here you can see no h is present. यहाँ पर कोई h present नहीं है और यहाँ पर k की जगह 2 है. So it means the vertex of this given parabola is your 0, 2. क्योंकि इस केस में जो vertex होते हैं these are your h, k for this standard form of the equation of upward parabola.
यहाँ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो h की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू 2 है, सो दिस इम्प्लाइज द वर्टेक्स ऑफ दिस अपवर्ड पैराबोला इज योर 0,2. Now let me find the, and this is the equation of line which is straight line and definitely it will pass through the origin, क्योंकि 0,0 is the point which is satisfying this equation of line. So this is the equation of line passing through the origin. This is the equation x is equal to 0 which is y axis itself. This is the equation of line x is equal to 3 which is parallel to y axis. So we have identified all the given functions or the curve. Now let me find the points of intersection. क्योंकि हमारे पास 3 लाइन्स हैं, एक कर्व है, तो पहले हमें ये चेक करना होगा कि आपस में ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं. सो लेट मी फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें लेट दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4. पहले फर्स्ट और सेकंड के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड. और फर्स्ट ऑफ सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए यू नो वेरी वेल वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन एंड इट इज़ टू बी पुट इन योर सेकंड इक्वेशन. जैसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये y के इक्वल है और सेकंड इक्वेशन भी y के इक्वल है, सो दे कैन बी पुट इक्वल टू ईच अदर. दोनों के दोनों y के इक्वल हैं, सो दे कैन बी पुट इक्वल टू ईच अदर लाइक दिस. दिस इज x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x. Take this x on left hand side, so this is x square minus x plus 2 is equal to 0. Now the quadratic equation is there. और quadratic equation को में x की वैल्यू निकालने के लिए मिडल टर्म स्प्लिट करना पड़ता है. सो मिडल टर्म स्प्लिट करने से पहले लेट मी चेक वेदर इट हैज़ सम रियल रूट्स और नॉट, और उसके लिए मुझे d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. और d के लिए क्या करते हैं, दिस इज गिवन बाय b स्क्वायर माइनस 4ac. What is b? This is minus 1. So minus 1 square minus 4, a is 1 and c is 2. So this is 1 minus 8 which is minus 7. It is your negative value. So d is your less than 0. It implies there is no value of x which is real. So there is no real value of x. So it implies this curve and this line will never intersect each other. ये कहीं पर भी आपस में intersect नहीं करेगी. Now let me find the point of intersection for the curve with the line x is equal to 0. Let me rub here. This is to be rub. Now first और second के लिए no point of intersection. Now first and third के लिए let me check. Whenever x is equal to 0 is there, then the y will be your 2. So the point is your 0,2. Now 1 with 4 this will be given by when x is equal to 3 then y is equal to this is your 9 plus 2 11. So the point is your 3,11. So this parabola, upward parabola intersect the line x is equal to 0 and x is equal to 3 at these 2 points, and there is no point of intersection with this curve and with this line. Now let me find the point of intersection with your equation number 2 and your 3. So x is equal to 0 implies y will be 0. So the point will be 0,0. Now 2 with your 4 will find x is equal to 3 implies y will also be 3. So 3,3 is the point of intersection. ये y is equal to x का x is equal to 0 और x is equal to 3 के साथ point of intersection है, और ये वाला हमारा पैराबोला जो कि x square is equal to y minus 2 है, उन दोनों का x is equal to 0, x is equal to 3 के साथ point of intersection है. After getting the point of intersection, dear students, we have to now draw the rough sketch. और rough sketch draw करने के बाद ही आपको bounded region मिलने वाला है. So let me draw the rough sketch. Let this is your the x-axis and y-axis. Let this point is your 1, 2, 3, 4. This is your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Let me first of all draw the parabola
whose vertex is given as 0, 2. This point is the vertex of the parabola. This parabola is intersecting the line x is equal to 0. x is equal to 0 कौन है? Itself this line. x is equal to 0 is line this one, and x is equal to 3. Let me draw here. x is equal to 3 is the line this one. This is your x is equal to 3. So let me first of all draw the parabola with the given lines. The first point of intersection is 0, 2, and second is your 3, 11. 3, 11, here is your 3, 11. So this is 10, and let me take here 11. So this is your 11. This point is your 3, 11. So just this is your upward parabola like this, intersecting the line x is equal to 3 at 3, 11, and x is equal to 0 at the point 2. So this is x is equal to 0, and this line is your x is equal to 3. Now we will draw the second line, which is y is equal to x, which is passing through the point 0, 0. This is the point of intersection with 0, 0, and next is your 3, 3. 3, 3 is your here as your 3, 3. So this is 3, 3. By joining this one, this is your y is equal to x. This is y is equal to x. This is x is equal to 3. This line is x is equal to 0, and this is your upward parabola. तो जो आपको 4 की 4 इक्वेशंस गिवन है वो हमने रफ स्केच में ड्रॉ कर चुके हैं. Now what will be the shaded region? This is the shaded region whose area we want to find. This is the region. And to find the area of this region, you can see this region is start with the point x is equal to 0 and ends with x is equal to 3. x is equal to 0 और x is equal to 3 के बीच में दोनों का दोनों जो आपका एरिया बाउंड हुआ है. और एरिया निकालने के लिए द लिमिट्स आर नाउ सेट हेयर फ्रॉम 0 to 3. जो एरिया आपको निकालना है वो 0 to 3 के बीच में लाई करता है. एंड यू कैन सी दैट माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ अपर कर्व एंड देयर इज़ ए लोअर कर्व. मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस के अंदर, कभी भी सेम लिमिट के अंदर अगर दो कर्व या कर्व और लाइन एक ऊपर लाई करती है एक नीचे लाई करती है, देन द नेट एरिया इज ऑलवेज गिवन बाय y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व. सो द एरिया ऑफ दिस बाउंडेड रीजन इज गिवन बाय, this is given by, area is given by the taking limits from 0 to 3 because it starts with x is equal to 0 and add with x is equal to 3. This is given by y of upper curve कौन सा है? This is your, let me write the first generalization, y of lower curve. Because we are taking the limit for x axis, so it implies we have to do the integration with respect to x. So now this is 0 to 3, y of upper curve is your parabola, upward parabola. This parabola is upper side. So this is given by x square plus 2 minus y of lower curve. Lower curve कौन है? Straight line which is given by y is equal to x. So this is your x. Now simply we will do the integration as your x cube by 3 plus 2x minus x square by 2 and from 0 to 3. Now just apply the generalization of the integration. Upper limit minus lower limit, this will be your 27 upon 3, 3 plus 6 minus 9 by 2 minus 0, 0 plus 0, and this will be your 9 and 6, 15 minus 9 by 2, which is given by 21 by 2 square unit. So this is the area bounded by your curve y is equal to x square plus 2, y is equal to x, and x is equal to 0 with x is equal to 3 as well.